इसके मेमोरेंडम में दीपक चौधरी से वीवी रेडमी एएमआई कंपनी की कीमत कम व आधी कीमत के फर्जी दस्तावेज तैयार करने की जानकारी उसे होना और जानकारी की जाने के संबंधी हाँ, तो ये रेडमी मोबाइल का क्लोजर कहाँ है इतना बता दीजिए आप। बट माय सबमिशन इज माय लॉर्ड की नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिस प्रेजेंट एप्लीकेंट माय लॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन की उसने रेडमी का मोबाइल लिया था। इफ माय लॉर्ड माय सबमिशन इज माय लॉर्ड की अगर इसने मोबाइल परचेस किया है तो मैं सिर्फ अपना बोनाफाइड परचेजर ये बता रहा हूँ कि मैंने अगर बजाज फाइनेंस से लोन लिया है तो मेरे अकाउंट से वो ऑटो डिडक्ट हो ही जाएगा। दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्रोसिक्यूशन की मैंने वो बजाज फाइनेंस से नहीं लिया, बजाज फाइनेंस ने इनको पैसा डिडक्ट नहीं किया। 12 पर जो कोर्ट पर लिख रहा है, ठीक है, तो वह लिख रहा है वीवी रेडमी एमआई कंपनी के मोबाइल के बारे में, ठीक है। और वो दूसरा लिख रहा है कि आप लोग मिलके फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे फाइनेंस कंपनी के। धोखाधड़ी का मामला है। इसमें होता ये था कि एक व्यक्ति जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उसको फाइनेंस कंपनी ने एक पर्टिकुलर शॉप पे, जहाँ पे वाइट गुड्स बेची जाती हैं, मोबाइल फ़ोन्स बेचे जाते हैं, यानी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब सामान बेचा जाता है, उस जगह पर नियत कर दिया। अब ये व्यक्ति कुछ दिनों में उस दुकानदार का या उस स्टोर के मालिक का विश्वास जीत लेता है। इस विश्वास के सहारे वो अपनी कहानी गढ़ता है और उसमें लोगों के सामने, आम लोगों के सामने जाकर ये कहता है कि मैं तुम्हें 50% में सामान दिलवा दूंगा। वो करता ऐसे था कि जब एक लिस्ट की तरह की चीज़ फाइनेंस कंपनी की तरफ से दी जाती थी उस स्टोर के, उस दुकान के मालिक को, कि इन लोगों का ये सामान फाइनेंस हो गया है, उस लिस्ट में ये अपने फर्जी नाम जोड़ देता था और ये वो नाम होते थे जिनसे उसने आधे पैसे लिए हुए होते थे। तो ये पूरा मामला था। इस मामले में ये जो सुनवाई है ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने उनसे सामान ख़रीदा। अब वो अपना ये दलील लेके आए, वकील साहब को बेल कराना है, तो उन्होंने ये दलील दी कि भाई देखिए मैंने ये 2, 4, 5 सर्टिफिकेट दिखाए कि देखिए मैंने पहले भी सामान लिया है और हमेशा ईएमआई जमा करी है, और ये 2-4 सामान के देखिए इसमें तो मैंने ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी है कि मैंने पूरी किस्त जमा करी। इस बात के बावजूद भी हाई कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल पाई, क्योंकि ये धोखाधड़ी के मामले में वो पूरी तरह से लिप्त पाए गए कि वो फर्जी दस्तावेज़ बनाना और उस पे सामान को लेना और ये तमाम बातें जो हैं ये साबित होती हैं कि वो उसका हिस्सा थे। तो ये जो आधार, ना तो वो अपने आप को इस केस से हटा पाए और ना ही बेल पा पाए। तो इस मामले को देखिए आप बारीकी से, ये सबके लिए बहुत सीख का मामला है। अगर आप सामान ख़रीदते हैं तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आपका शॉप, स्टोर या दुकान है तब भी इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे सिंपल थ्योरी को याद रखें बचने के लिए कि लालच बुरी बला है। ये सारे खेल उसी पर होते हैं। यदि आपके मन में लालच है तभी आप उसके हिस्सा बनेंगे। कोई दुनिया में क्यों आपको आधे दाम पे सामान देगा, और वो कितना भी कुछ भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत, इलीगल वो सबमिशन इज मतलब जो इनवॉइस लगे हुए हैं, द कंप्लेंट इटसेल्फ से दिस इज द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ दिस प्रेजेंट एप्लीकेंट मतलब is a bona fide petition malord. There is no criminal record against this present applicant malord, and he is in behind bars from 25/6/2022 and Shri Saurabh Srivastav, learned counsel for the applicant Faraz Qureshi. This is first bail application under section 439 full stop. Case crime number 607 of 2021 is registered at police station Talaiya, district Bhopal, for offence under section 420, 467, 468, 120B IPC. He is in custody since 26/6/2022. Next para. It is submitted that applicant has filed IA number, क्या है इसके IA number? IA number 15251/22 15251 of 2022. That is an application for taking additional documents on record. Full stop. Producing these documents before this court, it is submitted that applicant has been regularly purchasing white goods
oblique electronic items from Bajaj Finance Limited. After obtaining finance from Bajaj Finance Limited, full stop. He has produced no due certificate in relation dated 9/3/2020 in relation to Samsung A50. Full stop. No due certificate dated 15/8/2020 in regard to 1 volt back WM. Another no due certificate dated 16/1/2020 in regard to LG-LED, and then another no due certificate dated 21/6/2020 in regard to rural local phone, and thereafter a no due certificate dated 17/3/2021 in regard to B*-AC. Full stop. It is submitted that there is another no due certificate dated 9/6/2020 in regard to RITRA RETRA online-ECF, and thereafter he is paying installments for items, namely क्या है ये ऊपर it is nowhere mentioned my lord की namely Samsung refrigerator दिया हुआ पेज 16 पर जी जी two products Samsung refrigerator, full stop. Next para. Taking this code through these documents, it is submitted that applicant is a bona fide purchaser who had purchased certain goods on finance and he has been regularly paying installments. Therefore, he be enlarged on bail. Next para. Shri Ajay Tamrakar, learned penal lawyer, in his turn submits that allegation on the present applicant is that he has been made and accused on the memorandum of co-accused Deepak Chaudhary and no recovery is made from the present applicant. Next para. Shri Ajay Tamrakar in his turn submits that applicant has admitted obtaining 5 set of mobile phones from Deepak Chaudhary at 50% of the market value. He has admitted losing one of the Vivo Redmi MI company mobile and has also admitted in his own memorandum using other mobile phones. Full stop. It is submitted that none of the documents which have been filed by the applicant along with IA 15251 of 2022 pertains to any of these mobile phones and they are irrelevant. Full stop. Since on the memorandum applicant has been made an accused and recovery of mobile phones obtained on the basis of fraudulent papers prepared by Deepak Chaudhary, recovery has been made from the present applicant. It cannot be said that applicant has no involvement in the matter. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the documents which have been filed by the applicant by IA 15251 of 2002, except for one rural home phone, does not pertain to any of the mobile phones which have been recovered or which are mentioned in the memorandum of Shri Deepak Chaudhary or the memorandum of the present applicant. Full stop.
There is no iota of doubt, as has been submitted by as is submitted by Shri Kamrakar about recovery of certain mobile phones from the present applicant, showing his involvement as a gang member of a larger conspiracy team to defraud the finance company as well as the vendor. Full stop. None of the witnesses have been examined, and therefore for the present, merely on production of certain documents showing payment of loans in time or closure of certain loans will not help the applicant, especially when they are not in regard to the goods allegedly obtained by the applicant from Deepak Chaudhary, and applicant has not produced any document in regard to those 5 mobile phones that they were purchased on finance, and applicant is paying their installments regularly. In view of such facts, for the present, I am not inclined to extend benefit of bail to the applicant. Application fails and is dismissed. If the mother permits, may I argue, my submission, one last submission is there, my lord. The prosecution itself not filed any audit report whether कि किस चीज का amount है जो वो due रह गया है. ठीक, I tell you. Next.